Okay, students. Now tell me, students who are still not clear, who are still confused among these processes. कोई बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले हाथ सारे नीचे करो, हाथ सारे नीचे करो, नीचे कर लो, एबल बेटा हाथ नीचे. Now tell me the students who still have doubts in the four processes: evaporation, condensation, sublimation, and deposition. Who still have doubts, they can raise their hands. I think everybody is clear. चलिए अब हम निकालो, अपने निकालो, वर्कशीट्स निकालो. I think you must have tried. ठीक है, सबने की हुई है. किन किन बच्चों ने ट्राई किया, हाथ खड़ा करके बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड. हैंड्स डाउन. बस हम जल्दी से फिर बात करेंगे. एंड डिड यू गेट द रोल नंबर्स ऑल्सो? यस और नो? सबको रोल नंबर्स मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं तो हाथ खड़ा करो. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अर्जुन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. अर्जुन बेटा जल्दी से पहले अपनी साइंस वाली वर्कशीट्स निकालो. पहले मुझे कैमरा कंट्रोल दो अर्जुन. गिव मी कैमरा कंट्रोल. थैंक यू. एंड अर्जुन, हाँ जी बेटा अपनी साइंस की वर्कशीट्स निकालो जल्दी से. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अरोरा, गुड आफ्टरनून बेटा. गिव मी कैमरा कंट्रोल जल्दी से. Okay. So the teachers in Arjun and Aurora, can you please come in front of camera? In Aurora and Arjun, good afternoon, ma'am. So, ma'am, I want to say one thing only, that when we will have the class, this virtual class, please tell students to maintain silence in the class, right? So that we can interact clearly with the students. Because too many students, if speak simultaneously, no sound comes to us. That's why we have some interaction problem, right? And this time we will have lot of interactions, right? In English, in, after science class, you will have students, you also understand, teachers तो करेंगे आपके साथ, but you should also see कि भाई जब भी किसी ने आंसर देना तो एक बच्चा आगे आकर आंसर देगा. And teachers will facilitate those students. So this is my humble request to all class attendants. So thank you teachers. Please bring out your science worksheet. And able student, बेटा लास्ट में जो टुवर्ड्स वॉल जो दो गर्ल्स बैठी है, आगे आ जाओ बेटा, जल्दी से अपनी शीट्स लेकर आगे आ जाओ. दोनों आ जाओ, क्विक, जल्दी से भाग कर आओ, अपनी साइंस की शीट्स लेकर आओ. बुकर, गुड आफ्टरनून बेटा. स्विच ऑन योर कैमरा. अपना माइक ऑन करो एबल में. Yes. Tell me question number 1. Which process changes water into gaseous state? जल्दी से. Evaporation. It is evaporation. Very good. Go to your seat. Next. What happens when steam is cooled down? No. It turns into water. It turns into water. That's absolutely right. बैठो बेटा. Switch off करो कैमरा. And then Aurora. Aurora में towards window. Last में 3 girls जो बैठी है. Last bench and second last bench. Come to the mic. बुकर बेटा मुझे अपना कैमरा कंट्रोल देना. हाँ जी बेटा. अरोरा, टेल मी क्वेश्चन नंबर 3. अपनी वर्कशीट्स लेकर आनी है और थर्ड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है. यस, टेल मी जल्दी से. सब अपनी साइंस की वर्कशीट्स निकालेंगे. Which of the following has a definite shape? जल्दी से जोर से बताना है. जोर से.
Is it water, ice, steam कि none of these? आइस बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट गर्ल. Why does ice feel colder? जब हम आइस को टच करते हैं, why it feels colder? Because अच्छा मुझे अब ये बताइए. The girl who is standing, when we touch the ice, which has more temperature? Our ice और हमारे हाथ में किसका टेम्परेचर होता है? अरोरा, अरोरा कोई और नहीं बेटा. टेलिंग ओनली वन स्टूडेंट विल टेल मी. किसका टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे हाथ का कि आइस का? अरोरा बेटा कैमरा ऑन करो. और जिसको पता है वो आके मुझे बताइए कि किसका टेम्परेचर हाई है, हमारे हाथ का कि आइस का? देर इज वन बॉय. आ जाओ आ जाओ फटाफट से मिडल रो में. आई थिंक फोर्थ बेंच. आ जाओ जल्दी से, भाग के आया करो. टच आइस या आइस और हमारे हैंड में किसका टेम्परेचर हाई होता है इन कंट्री? हैंड हैज मोर टेम्परेचर. नाउ मुझे ये बताइए, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लो टेम्परेचर कि लो टेम्परेचर टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर? यस बेटा मुझे बताइए कि वेयर द हीट फ्लोज, हाई टू लो कि लो टू हाई? गर्म हीट का फ्लो कहाँ से होता है, गर्म से ठंडे की तरफ कि ठंडे से गर्म की तरफ? थोड़ा सा पीछे होके बोलो बेटा. और अगर पंखा चलाया तो उसको थोड़ा सा स्लो कर दो या बंद कर दो. हाँ. टेल मी अगेन, टेल मी वेयर द हीट फ्लोज from high to low temperature, right? So here, so this is your hand, let us say, and this is ice. When you touch the ice, what happens? The heat flows from hand towards ice. So when there is loss of heat from the hand, it appears cold. तो हमें हाथ में क्या लगेगा? ठंडा लगेगा. जब हमारे हाथ से, क्योंकि आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री. और हमारे हाथ का टेम्परेचर चाहे विंटर्स भी हो तब भी उससे ज्यादा होता है, राइट? सो द हीट फ्लोज, हमारे हाथ में से हीट का लॉस होगा. और जब जहां से लॉस हो जाए तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है. सो आंसर हियर इज इट एब्जॉर्ब्स. इट की जगह आप लिख लेना द. इट एब्जॉर्ब या हम कहेंगे नॉट हैंड, आई एम सॉरी. इट मीन आइस. आइस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द surroundings. Ice absorbs heat from the surrounding air. And I think one more girl is there. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 बताइए. नहीं 5th. Which of the following best describes the process of condensation? हाँ जी बेटा. Gas turning into liquid की solid. Heat. हाँ. Gas turning into
लिक्विड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैठो बेटा बैठो। देन वन मोर। चलिए बताए। नेक्स्ट इज अर्जुन। अर्जुन में से बेटा मिडल रो में से सेकंड बेंच पे जो बॉयज है दोनों आ जाओ, जल्दी से फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। What would happen if there is no evaporation in nature? आगे बोलो बेटा। The water cycle would stop. यस, वाटर साइकिल विल स्टॉप, क्योंकि जो क्या है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वाटर साइकिल इवेपोरेशन शुरू होगी तभी तो आगे काम होगा। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बॉय, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपेंस इफ ए वेट क्लॉथ इज स्प्रेड आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग लेफ्ट इन ए हीप? अगर हम उसको अच्छी तरह सुखा देंगे, एक है हमने ऐसे इकट्ठे करके रख दिया, एक अच्छी तरह से उसको फैला के सुखा दिया, व्हाट विल हैपन? Spread faster due to increase the surface area. वेरी गुड, इट ड्राइज फास्टर ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया। बैठो बेटा, माइक क्लोज करो और बैठिए। भारत रत्न, भारत रत्न में टुवर्ड्स वॉल, टुवर्ड्स वॉल मैम के आगे जो दो स्टूडेंट्स बैठे आ जाओ, मैम के आगे वाले बेंच पे जो दोनों बच्चे हैं आ जाओ, जल्दी से आओ, क्विक क्विक भाग कर। हमने आगे इंग्लिश की क्लास भी लगानी है। स्विच ऑन द माइक। क्वेश्चन नंबर 8। भारत रत्न आपने बेटा कैमरा ऑफ कर दिया, कैमरा ऑन करो। चलिए। हाँ जी बेटा बोलो। आपने बताया ना मुझे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू आइस क्यूब्स, हमने गिलास में रखे, थोड़ी देर बाद हमें वो दिखते ही नहीं, आइस क्यूब्स कहाँ जाते हैं? बोलो बेटा। Ma'am, see option. See option. ये आ जाता है, दे टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू कंडक्ट। पहली बात तो सीधा आइस वाटर वेपर में चली जाती है, इज इट राइट? क्या होता है, आइस क्यूब्स क्या करते हैं पहले बेटा? They melt and evaporate. B option. पहले मेल्ट करते हैं फिर इवेपोरेट करते हैं बेटा। सो इट इज बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक। आप बैठो। नेक्स्ट स्टूडेंट। Why does dew forms? Dew, you know, ओस की बूंदें, सर्दियों में जाओ, सुबह सुबह गार्डन में जाओ, लीव्स पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, ड्यू ड्रॉप्स। कहाँ से आए वो ड्यू ड्रॉप्स? डू यू नो? यस, सेम क्लास फर्स्ट गर्ल। आप बेटे यहीं खड़े रहे ना, द गर्ल विल एक्सप्लेन, है ना पहले Ma'am, ये। B. हाँ बोलो बोलो। Ma'am, B option. बोलो पूरी ऑप्शन बोलो क्या है। Ma'am, water vapor condenses into liquid during बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट। वाटर वेपर्स, जो एयर में वाटर वेपर्स है, ड्यू टू लो टेम्परेचर इन कोल्ड विंटर्स दे कंडेंस एंड फॉर्म ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग, जो खड़ी हुई थी आंसर के लिए, भारत रत्न में से आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो और मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। व्हाई डू अवर हैंड्स फील कोल्ड व्हेन वी अप्लाई सैनिटाइजर? Ma'am, B option. To sanitize the droplets from our hands as it बिल्कुल ठीक है, evaporates. वेरी गुड। द सैनिटाइजर्स एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम अवर हैंड एंड इवेपोरेट्स। तो हमारे हाथ में से जब हीट गई तो हमारे हाथ को क्या लगा? ठंडा लगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। हाँ जी, भारत रत्न अर्जुन बुकर। हाँ जी, बुकर में से एक गर्ल का हाथ खड़ा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी वर्कशीट लेकर आओ। चलिए जल्दी से, स्विच ऑन द माइक। क्वेश्चन नंबर 11। माइक ऑन करो बेटा, somebody हेल्प। हाँ जी। Mixed.
कौन सी ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन बी। पूरा सेंटेंस बोलो बेटा। वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट फॉर्मिंग स्टीम। ठीक है, बैठो बेटा। हाँ जी, somebody फ्रॉम सेम सेक्शन में से। हाँ जी, हाँ जी, एक और गर्ल का हाथ, एक बॉय खड़ा है। आजा आजा बेटा, आप ही आ जाओ। द बॉय हु इज स्टैंडिंग मिडल रो सेकंड बेंच पे जो खड़ा था लड़का, आजा। आओ, वर्कशीट लेके आओ, वर्कशीट लाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। What would happen if heat water but keep it covered? हम पतीले में पानी हीट करते हैं और उसको ढके रखते हैं, तो क्या होता है बेटा? ऑप्शन। बताइए, पूरी पूरी लाइन बताइए। The water is Yes, the water condense on the lid and form water vapors. तो हम प्लेट उठा के देखें, लिड उठा के देखें, तो उसके नीचे वाटर वेपर्स है, कि उससे क्या पता चलता है कि ये वो कंडेंस हो गए एंड इट। चलिए जी, एक हम वन क्वेश्चन हम और करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज एबल। एबल में बेटा इधर से तीन, ये जो फर्स्ट स्टूडेंट का हाथ खड़ा है टुवर्ड्स बॉल, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13। हाँ जी, हम एक पानी के गिलास को बाहर रख दे धूप में, क्या होगा? The water will slowly evaporate due to heat. बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे। नेक्स्ट, अभी माइक ऑन ही रखो बेटा, एबल माइक ऑन रखो। पीछे दो गर्ल्स का हाथ खड़ा है बेटा, लास्ट सेकंड बेंच टुवर्ड्स विंडो, आ जाओ दोनों, फटाफट जल्दी से आ जाओ। स्टीम थोड़ी देर बाद हमें दिखती नहीं है, कहाँ चली गई? Into liquid water. ये दोबारा से। ऑप्शन सी, इट कंडेंसेस बैक इनटू लिक्विड वाटर। बिल्कुल ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। व्हाई डू वी सी फॉग इन विंटर मॉर्निंग्स? Water vapor is the air condenses tiny water drops. वेरी गुड, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। एंड वी हैव डन 15 क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट लगा के हम बाकी के भी करते हैं। नेक्स्ट इज ऑरोरा। ऑरोरा, यस, ऑरोरा में बेटा मिडल रो में फोर्थ बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं वो आ जाओ, जल्दी से आओ। कम क्विकली, स्विच ऑन द माइक। क्वेश्चन नंबर 16। सेम जी। गर्मी बहुत लग रही है, आपने पंखा चला दिया तो हमें ठंडक फील होती है। वी फील कूल, व्हाई? डू यू नो और यू डोंट नो? फ्रॉम द सन। Sweat stop the air from the स्वेट एब्जॉर्ब एंड इवेपोरेट। स्वेट क्या करता है बेटा? हमारी बॉडी से हीट लेता है, इवेपोरेट। हमारी बॉडी में जब हीट लूज हो गई तो क्या हुआ? कूलनेस। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, द अदर गर्ल। वेयर डज कंडेंसेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल? B option. ई ऑप्शन, इन क्लाउड्स फॉर्मिंग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वेरी ट्रू। ठीक है जी। सो रीजन असर्शन क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये लेकर आइए। ठीक, सो टुडे बिकॉज we have taken your science classes earlier also, that's why I'm cutting short the science class. We are introducing the English class today. ठीक है, but everybody sit down. Able boys sit down. बैठ जाओ बच्चों।
सबने बैठना है, जो मैम पूछती है उसको आपने आंसर देना है वन बाय वन, जैसे आपने साइंस में आंसर किए। ठीक है जी। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू यू विद इंग्लिश। And we all, it really makes her empowered, and it makes us very enriched with the language. And so English is very important for all of us. Now, you have been studying English since, I think so, nursery class. Yes? So I want to know one or two things, like what do you think is the life of children at the orphanage? How do they live? Do they have a happy life or unhappy life? What kind of life do they have? Who will come and tell me? Anyone? Okay, I can see a hand raised. Yes, I think so. It's from Aurora House, from Aurora class. Can you come forward? No, it's from Abel. Unhappy. Okay. Can anyone come forth and just explain it to me? What kind of life do you think these children have? एक मिनट, एबल में बेटा एक स्टूडेंट कर रहा है, लेट हर टेल। यस Yes. And sometimes they have happy life and sometimes they have unhappy life. Yes. Yes. Do you think they miss the love of their parents, the love and care of their parents? Yes. 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 So we are very lucky that we live in a home, our parents, although we don't like some things, like sometimes we are not very happy with our parents, but still we are very lucky people. Now you must have come across all these words, okay, when you read this chapter. And if you have not read this chapter, then वर्ड्स के मीनिंग्स बता दो, Okay. देन दे विल। so I'll just tell you the meaning of this words. What बेटा is the अपनी yes, वर्कशीट्स निकालो इंग्लिश की। yes, please उसमें take out your ये- worksheets. Right? So write the meaning of these words and then fill up the, these sentences, the blanks. Okay, ma'am will tell you the meaning of these words. So have you ever come across the word humor? Everyone, do you know what's humor? Yes, I can see one from Booker class, the girl sitting on the first bench, okay, in the middle row. Can you come and tell what is humor? Okay, the boy from the Booker class, the boy in the middle row, the boy on the second bench. The boy sitting on the left side, second bench. Can you come? I saw your hand raised. Anyone from any of the sections who knows the meaning of humor can come. Come forth and answer. Very good. I can see someone walking up to the mic. हाँ जी बेटा, what is Yes, humor? yes. What is Speak humor? loudly. Fun. Fun. Okay. Yes, we can say like humor is it is a person has this kind of a attitude where you make every situation light and happy. Okay, so we say this person has a great sense of humor because that person can lighten the moment, something who will make the situation light with their one liners, with the fun, like they twist the words, make it look so nice and happy. Okay, so this is called humor. Okay, yeah. So what will you write for the word? A great sense of. Write down the meanings बेटा. A great sense of lightening the situations
or creating light-hearted moments, or creating light-hearted moments, creating great sense of lightning or creating light-hearted moments. Okay? Creating light-hearted moments with a speech. Okay? This is with a speech. They will create, that is a sense of humor. Moments. Okay. Now, what is a vault? Vault. Now, see, there are two kind of vaults. Okay. One is, vault is like a locker. Like, have you seen a bank locker or some place like, where people put their expensive jewelry, they put their expensive things, or they put their money? That is also a vault. And one is jumping over something. Okay. You jump over a fence, you jump over something, that is also vault. When you jump over something. So write down, jump over something. That is vault. Vault. This is called a vault. Okay. Now you already gave me, one of you gave me the meaning of trustee. A member of the board or council who helps, like, or who sees the working. A member of a board or council who sees the working of an institution or an organization. So, okay, I'll just write here. Trustee, a member of a board or council who looks after the working of an institution. Okay. Porch. Porch. It is, you can pay attention to the pronunciation also. It's called porch. Now, when you enter, especially a house, you must have seen there is an enclosed area which has a roof. Okay, but does not have any walls, which is also called, in Punjabi, we say veranda, or in Hindi, we say veranda. It's actually an English word, okay, but we have made it sound like Hindi or Punjabi. How many of you have veranda in your house or a veranda? Very good. So normally porch has, it has a roof. It has a roof, but it does not have walls. Okay, so it is like an open, it is a veranda. So you can write like veranda here. It's a veranda. Okay. So everybody understood what it is? Sometimes you will sit under it and you like to have a cup of coffee or tea on a nice rainy day or something like that. Chapel. Chapel have, do you have a church in your city? Do you have a church? No. No? Okay.
Have you ever visited a church? Very good. So when you go inside the church, can someone come here and tell me what did you see in a church or how a church looks from inside? Yes, those two boys in Abel. One of you can come sitting in the second last bench in the middle row. Can you come and tell me? Okay, I think there's a girl. Yes, yes, you can come. Can you come? बेटा जिसको पता है अर्जुन में आ जाओ आ अर्जुन जाओ, आ जाओ. You can come and tell us how a church looks from inside. अर्जुन में हाँ जी हाँ Let's find out there is a Jesus Christian. Yes, there is Christ. Like you will always find a statue of Christ. Yes, Booker, first middle row, first girl. Please come and tell me what else do you see in a church? So everybody knows there is one statue of Jesus. माइक ऑन करो बेटा हाँ Yeah, it was there were two many signs and close signs. Mama, I saw a large big statue of Jesus Christ. So Jesus Christ is definitely there is a statue of very large statue of Jesus. Yes, from Aurora House I can see a boy raising his hand towards the window. Can you come? Yes. कुकर बेटा कैमरा ऑन करो I see iron benches. Very good. So you will see rows and rows of benches. They are called pew. P-E-W. Okay. So like they are called pew and people go there and then there is an altar. Altar hai jahan pe they will go and sit down like this. They will go on their knees and they will pray. Then there is a confession room, okay, where they can inside the box there is usually a priest sitting and then somebody want to confess because confession is a very common thing in Christians we can do. But the place where they go and pray, okay, altar, and uske aage, like they have this called jahan par it's right in the back in the end it is called a chapel. Okay, so this is in the church. Normally weddings will happen here, christening ceremonies, मतलब किसी का नाम रखना है कुछ करना है, that will happen here. The Christians will go here. So weddings, uh, anointations, like sometimes like people will go there. जिनको Christian करते हैं, like they will be given food and water and everything, like when they take that faith. Okay, so all these things happen in a chapel. Okay, now, so chapel is the innermost part of the church. Okay, so this is the part of the church where people will go and pray. जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो या मंदिर जाते हो, you have seen like where you go and you bow down. Okay, so that is like a chapel. Have you understood what is a chapel now? Next word is awful. What is awful? हम awesome बोलते हैं ना? If we like something, we all say, yes, come, come, I can see somebody enable. Yes, yes, come, come, come forward. Enable class, yes. That's a very common word which is used these days. Very bad. What do you say? For Very bad. yes, it is. Like awful is extremely bad, intolerable, something which cannot be tolerated. Awful. Okay, extremely bad, and we use awesome a lot these days. Okay, it has become a very common. It's the opposite. It means very good, something very nice. Okay, so you can write very bad. Sermon. What is sermon? Yes, very good. Booker, come. I can see that boy is the last one. Yes, that girl. Sorry.
I didn't get it, beta. Can you repeat it? Can you repeat it? I can see a lot of hands raised. Very good. Perfect. Very smart children. Okay. Somebody from Aurora House? The boy in the front? Yes, you can. Okay, okay. Come. It's lecture. Yes, it's more kind of a lecture. So basically, sermons are religious lectures. Okay? They can be like when you go to the Gurdwara Sahib, katha hoti hai. आप मंदिर जाते हो वहां भी कथा होती है. So when you go to a church, जो वहां की कथा होती है उसको हम sermon बोलते हैं. What do we call it? Sermon. Okay? And please pay attention to the pronunciation too. Now, you know the meaning of all these words. Could you please put them where they fit? And just 5 minutes, not more than that. Yes, beta. Yes, Aurora, how's you already done? I can see a couple of hands raised. I can see. तो बेटा भारत रत्न में से पूछना है आप. Yes, Somebody from Bharat Ratan. You can take 5 minutes and I will ask the answers after 5 minutes. Okay. So I'll just wait. Anyone ready from Bharat Ratna with the first answer? Are you ready with the first? Yes. Towards window बेटा जो girls का हाथ खड़ा है, I think third or fourth bench, दोनों आ जाओ आगे. Both girls come forward with your sheets and then tell. Mic on करो. Yes. And Salman. No, I want you to read the whole line, the whole sentence. It's a weekly sermon in the chapel. Mr. Root gives a weekly sermon in the chapel. Very good. It's sermon. Okay, just now. So very nice. Second girl बेटा आ जाओ जिसने आंसर नहीं दिया आओ. Second बताइए. You want to give the answer for the next question? Yes. Rahan talks well and has sense of words. Raman talks well and has a keen sense of Void. what? No, better. No. It's okay. Keep trying. No need to feel bad about it. Yes. I can see a hand raised from Aurora House, middle, the girl sitting, girl at the end. Middle row, the girl at the end. जल्दी से जल्दी. You will read the whole sentence, okay? You will not just give me that one answer. Raman talks well sense of humor. Keen sense. And has a keen sense of. What did you say, beta? Could you repeat? A keen sense of. Okay. Did you say humor? Let me ask. Yes. Okay. So how many of you got this right? Humor? Raise your hands. Very good. And what do you mean by keen sense? Like too much. Okay. Very astute. Yes. Next. I had a blank dream last night. I woke up screaming. Okay. Yes. Someone from the able house. Towards the window, this side, on my left. Okay, I can see a girl. Towards wall बेटा. Yes. थर्ड बेंच पे जो गर्ल है आ जाओ. Come in front. वॉल की तरफ. चलिए आप आ जाइए. आ जाओ. आ जाओ. Come quickly with your sheet. Sheet का आपकी.
Yes. Come quickly. Yes. I had an sleep last night. I woke up. Yeah. Could you repeat the word? I had an awful dream last night. Okay, very good. The answer is right, but you have to pay attention to the pronunciation. It's awful. Awful. Aw. Okay? बोलो I दोबारा. had an awful dream. Okay, everybody repeat in your mind. Awful. Very good. Next. Next, who come? Yes, Aurora House. I can see the boy in the first, middle row, second bench. I think so. Yes. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम. Ma'am, this was the time now. Sorry to interrupt. मैम बस we will take Yeah. 2 minutes only. We just want to finish. Okay. Oh, okay. Thank you, ma'am. Yes. Could you read this? The whole sentence? Yes. Come on. औरोरा में बेटा जो बच्चा खड़ा है जोर से बोले था मैं सुन नहीं रहा. मानसी. only one student बोलो बेटा. हमें समझ नहीं आ रहा है. औरोरा आप बैठो बेटा. somebody from बुकर में आ जाओ बेटा. बुकर में जिसको पता है. The total children from Able House want to speak even from Aurora. हाँ जी बेटा बुकर में. Is there anyone in the Booker class? Okay. Okay, Arjun. I can see the boy in the middle row. Yes. Come quick. Yes. My Mansi's friend or put while trying to. Yes. I'm trying to vault. Vault over the fence. This is the word vault. Like jump over. Okay, so it is vault over the fence. Very good. Next. Next, who will come? Okay, Bharat Ratna. I can see the towards the wall. Second last bench, I can see a boy who raised his hand and put it down back. Yes. Come, quick. Faster. Mrs. Veena Sharma is the newly appointed trustee of the orphanage. Very good. Perfect. Okay, I want somebody from Booker to be ready with the next answer. Okay? Next, who will answer? Next, who will answer? Yes, Able House. I can see quite a few hands raised. Lisa and Liam will get married at the old chapel. Okay, Chapel. Okay. Lisa and Leah. Lisa and Liam will get married at the old. Come. Able House, the boy who's sitting towards the wall. I can see. I think so. I don't know. It's the fourth row. Yes, come. That boy who stood up. Please come quick. चलो दोनों के आंसर्स बताओ बेटा अभी. फटाफट. Lisa and Liam will get married at the Chapel. yes. Next, the family sat on the yes. Aurora House, lots of people. Very good. I'm so happy. Oh yeah, everybody's jumping to come. Yes, this girl I can see in the forefront. Come from the side row. अच्छा कोई आ जाए कोई बताए Yeah, one बेटा. of But you. only one student. Yes. I'm so happy you all are so eager to answer.
Yes, the family sat on the family sat on the porch. Very good. Enjoying the cool evening breeze. So I'm sure you will all remember these words very well and they will become a part of your active vocabulary. That means you will start using them when you speak. Okay? Until unless you speak, use them, it will be of no use. Okay? Rest, you can complete it at home. Any four new words, there is a sheet, put them there, and then we can discuss them in our next class. Okay? Thank you so much. Have a good day. I hope you like the class. Did you like the class? Very good. Perfect. Okay, beta. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, students. Yes. Thank you, everyone.